Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 5 students. It's your maths book and today we are going to start its unit 3 which is fraction. Look here, unit number 3, fractions. In this unit we will learn all about fractions and we do the operations of addition, subtraction, multiplication and division by using fractions. Now we are going to start exercise number 1 which is on page number 28 and exercise number 1 is add the following fractions with whole numbers. Look here at the top of the page, addition of fraction with a whole number. To add a fraction and a whole number, we change the whole number into fraction by putting 1 as a denominator of the whole number. आपने 1 राइट कर देना है in the place of denominator under the whole number. Okay, now we start the exercise. 10 by 11 plus 8 for the solution. Look here the notes. First 10 by 11 plus whole number 8, this is fraction and this is whole number. In the place of denominator under the whole number you will write the 1. First आपने denominator की place पे 1 write कर देना है. Then look here, you can add or subtract any fractions when the denominator are same. Denominator जब same होंगे तब आप add और subtract कर सकते हो. For this आपने इनको same करने के लिए आपने इनका LCM find out करना है. LCM of 1 and 11. In the extra work 1 will be remain the same. 11 ones are 11 and look here the LCM will be 11. Okay, it's mean you will change this fraction. First start from the place of denominator. Denominator की place से आप चेक करोगे कि 1 will be multiplied by that number, the answer will be 11. 1 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 11 होगा. 1 11s are 11. इट्स मीन फॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपर साइड पे भी आप 11 से ही मल्टीप्लाई करोगे. 11 8s are 88. Look here, the new fraction is 88 by 11 and here is 11 already exist in the place of denominator. 10 by 11 plus 88 by 11, these are like fractions. Like fractions को अब आप add कर सकते हो. 11 will be remain same in the place of denominator and 88 plus 10 will be 98 answer. 98 by 11 is the answer. Okay, you can do the practice of all the other parts of exercise 1 on your notebooks. Look here, now we focus on exercise number 2. Add the following fractions and in this exercise here is a task for you that add 2 fractions. In this exercise you will add 2 fractions. Okay, but also for this exercise when you add 2 or more fractions denominator will be same. Okay, like fractions होनी चाहिए. First part is 1 by 4 plus 1 by 8. Look here, in these 2 fractions the denominators are not same. Here is 4 and here is 8 and for the same denominators and also for the solution, look here the steps. First one you will take the LCM of 4 and 8 denominator digits. Okay, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Next 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 1 will remain the same, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 will be the answer. It's mean the LCM answer is 8 and in the place of denominator the digit will exist must 8. Okay, must 8 होना चाहिए. Look here, here is already 8. Okay, and you will write the 8 ones are 8 and 1 ones are 1. Okay, but in this fraction you will start from the denominator place. डिनोमिनेटर प्लेस से आप चेक करोगे कि कौन सा डिजिट आपके पास ऑलरेडी है और किस डिजिट से ये मल्टीप्लाई होगा. आंसर विल बी 8. 4 2s are 8. यू विल राइट द 2 ऑन द अपर साइड इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आप अपर साइड पे भी मल्टीप्लाई करोगे. 2 1s are 2, 4 2s are 8, 1 1s are 1 and 8 1s are 8. Look here, these 2 fractions are no like fractions.
आपने इनको कन्वर्ट कर दिया, अनलाइक फ्रैक्शंस थी आपने लाइक में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इन्हें ऐड कर सकते हो। 8 will remain the same and numerator numbers will be added. 2 plus 1 will be equal to 3, 3 by 8. If you have 2 or more than 2 fractions, अगर आपके पास part D, look here part D, 2 by 5 plus 1 by 10 plus 3 by 10. If you have 2 or more than 2 fractions, you will do the same step. Same, first you take the LCM, then you convert these fractions into like fractions and then do the addition. Okay, and denominator will be remain the same. Now we focus exercise number 3. Solve the following word problems. And the first part is Hassan gave 1/3 of a pan pizza to Amir and 1/6 of Javed. Okay, how much of the pan pizza did Hassan give away? इट्स मीन गिव अवे उसने कितना दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने जितना उसने हसान को दिया जितना आमिर को दिया दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज उसने ये दोनों पार्ट्स दे दिए हैं। ओके, सेम लाइक एक्सरसाइज नंबर 2 यू विल डू द एडिशन। ओके, सेम 1/3 plus 1/6 and take the LCM of 3 and 6. 3 and 6, take the LCM of 3 and 6 and LCM will be equal to 6 like this. आपने इस तरह LCM लेना है, then convert into like fractions. आपने इनको like fractions में change करना है जहाँ पे denominator same होंगे। ओके, 1/3 आपने denominator प्लेस से चेक करना है, 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर will equal to 6, then multiply by 2. Also look here, you will write the 2 in the place of numerator. 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2/6, 1 1s are 1, 6 1s are 6. These 2s are like fractions, these are 6 and will remain the same in the place of denominator and 2 plus 1 will be 3. 3/6 pan pizza give away. Okay, look at the next part. Ali gave 1/3 of a pan of brownies to Samina and 1/6 of pan of brownies to Salma. 1/3 उसने समीना को दिया and 1/6 उसने सलमा को दे दिया। How much of the pan of brownies did Ali give away? उसने कितना दे दिया, आपने यहाँ पे भी एडिशन प्रोसेस करना है। Look at the next part. आमिर went for a long walk. आमिर वॉक पे जाता है, लॉन्ग वॉक पे। He walked 3/4 of a mile. उसने इतना वॉक किया एंड 1 मील का 3/4 पार्ट। ओके, एंड देन सैट डाउन फॉर टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट, रेस्ट के लिए बैठ गया। देन ही वॉक 3/8 ऑफ ए माइल। देन उसने 3/8 ऑफ ए माइल इतना पार्ट उसने कवर किया। हो फैर डिड ही वॉक ऑल टुगेदर ओवरऑल इसने कितना वॉक किया, तो आपने यहाँ पे एडिशन प्रोसेस करना है। 3/4 plus 3/8, take the LCM, convert into like fractions, then do the addition. Look at the last part. Bashir made 2 types of sweets. बशीर ने 2 types की sweets बनाई। He used 2/3 cup of sugar for 1 type. 2 type की sweets बनाई। 1 type की sweets के लिए उसने 2/3 जो है कप यूज़ किया शुगर का एंड 1/4 कप ऑफ शुगर फॉर द अदर। दूसरे के लिए 1/4 कप शुगर का ऐड किया और यूज़ किया। ओके, हाउ मच शुगर डिड बशीर यूज़ इनटू स्वीट्स? दोनों स्वीट्स में उसने कितना शुगर यूज़ किया? यू विल डू द एडिशन प्रोसेस। होप सो यू अंडरस्टैंड दीज 3 exercises and also do the practice of these exercises and all the remaining parts of exercise 1 and 2.